हेलो एवरीवन, मैं सुनीता खत्री, लाइफ कोच विद लाइफ ऑनर्स। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हर कोई अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करता है। आजकल की लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है और इसलिए हमें स्ट्रेस भी ढेर सारा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है उनको एक सिस्टमेटिक करना ज़रूरी है और उसमें अपनी हॉबीज़ को इंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। और अपने घर के जो बड़े हैं उनके साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि उस अपने एक्सपीरियंस से हमें वो स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी हम स्ट्रेस फ्री नहीं हो पा रहे हैं, तब हमें ज़रूरत है कि हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से राय लें, जो हमें लाइफ को कैसे एंजॉय करना है और कैसे स्ट्रेस फ्री होना है वो हमें बताएंगे। इसके लिए हमें उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। हैप्पी मेंटल हेल्थ डे। Hi everyone, my name is Vani and I'm a certified life coach. So today I have something in my mind for you and let's talk about it together. So if we are suffering from fever, cold, cough, if we have any ache, we go to doctor because we know that is the right person and we need to be physically fit and healthy. We take proper precautions, we take proper medicines, rest, everything. But in our day-to-day life, we are facing so many challenges and we are unable to overcome it. And there's a point when we face trickling of fear in our head. And that leads to anxiety. That leads to depression. People say it's not normal. And they used to make so many gossips around it. Some of them don't want to talk about it. But my dear, it's normal. I repeat, it's normal. If you know you are facing some anxiety, you are depressed and you want to come out of it, it's normal. It becomes abnormal when you don't want to accept it, when you don't want to consult to the counselors, when you don't want to talk about it. It becomes worse. So if in our life, in our day-to-day life, we want to be physically fit, it's very important to be mentally fit because that's when the game begins. So I wish to all of you a very happy World Mental Health Day from Life's Honor. Thank you. Hello everyone. On the occasion of World Mental Health Day, let's talk about stress at workplace. What is the single most reason for your stress at workplace? Is it that someone in your organization bullies you or harasses you? Or do you feel that you are underpaid? Or there is tremendous work pressure? Believe me, there are reasons. These reasons make us upset. These reasons impact our mental and physical health. So what are the ways to come out or to manage these stress factors at work? Today I'm going to share 3 tips with you. Tip number 1, when you look into the mirror, talk to yourself. Say nice things about yourself. Trick number 2, put a picture of you as a 6-year-old in your bathroom mirror and start talking to your picture. And trick number 3, develop a positive attitude toward you and your own picture. Believe me, if you follow these simple tricks for 40 days, you will come out of all types of stress at work. You will be able to manage stress at work and you will be able to turn stress at work into energy. This is Kapil, Executive Life Coach from Lives on the Family. We, all coaches, wish you a healthy and happy mind on World Mental Health Day today. Thank you.
Hey everyone, today it's World Mental Health Day and I'm here to share a wonderful message with all of you. क्या आप जानते हैं कि कैसे आप अपने रिश्तों पे काम करके अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हो और कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम करके अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो, राइट? These both things are related to each other. कैसे मेंटल हेल्थ आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है और कैसे रिलेशनशिप्स आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है. हाउ कैन यू ग्रो बोथ बाय वर्किंग ऑन एनी ऑफ द एस्पेक्ट. वर्क ऑन योर इनर सेल्फ थ्रू योर वैल्यूज. आइडेंटिफाई योर राइट वैल्यूज. कनेक्ट विद वैल्यूज, योर इमोशंस, which will automatically reflect in your behavior with your relationships. Relationships grow होते हैं हमारे खुद के कनेक्शन के साथ होते हैं. जब हम एक कनेक्शन खुद के साथ क्रिएट कर लेते हैं, वो ब्रिज हमारे और हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में ख़त्म हो जाता है और वहीं एक नई जर्नी स्टार्ट होती है हमारी खुद के साथ और हमारे रिलेशनशिप्स के साथ. तो किस बात का वेट कर रहे हैं हम कब इस बैरियर को तोड़ेंगे खुद के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ. वर्क ऑन योर मेंटल शिफ्ट. चूज एनी ऑफ द वे which is gonna give you the right direction to work towards your mental health. Work on your mental health and improve your relationships. Improve your relationships and work on your mental health. I am wishing all. I'm Manmita Das Rena, life coach at Life Honors. Today is World Mental Health Day. Our mental health is as just important as our physical health. So cater good food to your mental health. Wish you all happiness in abundance. This is the one of the very important day for all of us. On this day, on this occasion, first I would like to say a special thanks to all mental health experts from all over the world. You know, all psychologists, psychiatrists, life coaches and counselors, they are playing very important and outstanding role for our society, for our nation. So yes, first of all, would like to say special thanks to these people. Special salute to all mental health experts on this day.